Hello G, hello, how are you? Good evening to all of you. So, today we will start a quick revision of syllabus for Men's 2025 through PYQs and NYQ, right? We will focus on high priority topics from where questions are expected this year based on previous year questions, analysis, particularly analysis of CSE 2024 question paper, right? See, like this course is named as crash course, but I have objection with this name. Crash course, I guess it's related to, derived from crash landing. And in crash landing of aeroplanes, only few survives, others are wounded, yes, na? And few others lose their life also. But I wish you all to qualify Men's 2025. Not only with help of this course, this quick revision session, PYQ and NYQ, analysis, outlining of the topics, the content, what all dimension should be covered in particular, topic, but also a good revision of your foundational learning, right? See, truly speaking, these short courses, just meant for quick revision of the syllabus, outlining the dimensions related to particular topic, and filling the knowledge gap, right? Analyzing some of the PYQs, and on the basis of that, reflecting on NYQs, next year questions, right? This year questions, right? Your overall performance will depend on your foundational learning. How better you revise your foundational notes, that will determine your performance in men's examination, right? So, please, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो फॉर मेंस या जनरल स्टडीज का कोर्सेज फॉर मेंस, है ना? जस्ट मेक इट अ मीन्स एक्चुअली फॉर रिवीजन, इंटरेक्शन विथ टीचर, डाउट क्लैरिटी, है ना? फीडबैक्स, राइट? अपडेशन इन नोट्स एंड फिलिंग सम नॉलेज गैप, यस ना? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, like brainstorming, thinking, this year question. If you analyze previous year question, 2024 question, 50% of the questions are reflective and applied in nature. And those reflective applied questions, in those reflective and applied questions, you will have to reflect on syllabus. Knowledge matrix, not only of one topic, rather multiple topics. Yes, na? To write those reflective and applied, answer of those reflective and applied questions, right? So again, here we will think of some, we will brainstorm, some applied and novel questions, isn't it? New questions, right? Change in orientation of question pattern. Last year, almost 50%, in 50% questions, like meaning and orientation, demand, the context was, changed. There is clear deviation from the established pattern, not only in sociology optional, in other optionals too, right? And therefore, you will see overall marking pattern has also gone down. A score of
topper is also around, I guess, 270 or 278 something. Yes, na? In sociology also, one of my student is that is, I guess, 294 something. Yes, na? 294. Matlab that 300 plus 310, 314, 325 ऐसा स्कोर नहीं है इस बार. And that because of कि many students could not justify the context of applied and reflective questions. है ना? You should not be overtly dependent, you know, on test series कि बस test series कर लिया हो गया मेरा. अरे भाई test series is a means to get feedbacks on your answer, clarify your doubts related to answer writing, right? Interact with your teachers, है ना? Fill knowledge gap if any. Knowledge gap अगर कुछ है तो टीचर से बोलिए कि सर ये knowledge gap है, इस पे नोट्स दे दीजिए, मेरे इसको समझा दीजिए, है ना? One on one interactions, है ना? वो मीन्स है. That's not an end actually. मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो टेस्ट के बच्चे हों, एसे टेस्ट के बच्चे हों या सोशियोलॉजी टेस्ट के बच्चे हों, मेंस में जो अपीयर हो रहे हैं, your foundational knowledge will matter there in examination hall. इसलिए please make these courses, है ना, that crash course. हालांकि crash course मैं नहीं बोलूँगा इसको. This is quick revision of syllabus through PYQ and NYQ. Next year question with outlining of syllabus topic, dimensions of syllabus topics. We will outline the dimension of syllabus topics, है ना, कि how many dimensions you should revise, है ना, how to make, you know, short notes while doing revision. Not only vertical brainstorming while doing revision, but also horizontal brainstorming, है ना, doing correlations. Yes, na, backward forward linkages, है ना, right? In sociology, like, you will find that thinkers, the classical thinkers particularly, right, core thinkers, like, have their viewpoints and perspective on every aspect of society, be that economy, be that polity, be that education, be that religion, family, kinship. Yes, na? And these topics, you know, you have to learn in syllabus, so you have to do backward forward linkages also while doing revision on your study table. Yes, na? Getting your point? You have to think something applied. Applied भी thought करना है. जैसे in previous year, for example, in previous year we'll see one question. Europe was the first and the only place where modernity emerged. Comment. Now this question seems to be related to the topic modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. But there is no key, keyword of emergence of sociology in this question. Yeah, this question relates to modernity. Yes, now this is applied question actually, right? Europe was first and only place where modernity emerged. You have to like reflect on the knowledge matrix, what you have studied, not only in this topic modernity and social change in Europe and emergence of sociology, but other units also. Yes, na? Whether modernity emerged first in Europe or elsewhere too, right? Similarly, on the basis of, you know, like this question, you should think more applied question, like critically analyze the view that sociology as a discipline carries legacy of colonial modernity. Sociology as a discipline carries legacy of colonial modernity. Yes, na? Ab you have to apply, you will have to reflect. Ab ye term colonial modernity you have not studied. Yes, na? Ya fir question may be like, modernity is not a monolith but a plurality of experiences. Modernity is not a monolith but plurality of experiences, right? Discuss with reference to development of sociology. मतलब आज तक जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे आपको डिस्कशन करना है कि मॉडर्निटी इज नॉट अ मोनोलिथ, रादर
but a plurality of experiences. So, on the basis of previous year question, like Europe was the first and the only place where modernity emerged, you should think such applied question also while doing revision on your study table. है ना? Problem prediction is very, very important, right? For solution of the problem, for finding out solution of the problem. And that we generally don't do on a study table. हमने उसको outsource कर दिया है कि चलो ये तो कोचिंग कर लेगा. अरे भाई ये 2 months में 3 months में कोचिंग क्या ही करेगा, है ना? आपको इस शॉर्ट कोर्सेस में क्या ही मिलेगा, राइट? ये सब तो आपको स्टडी टेबल पे रिफ्लेक्ट करना होगा ना, राइट? विद द हेल्प ऑफ सच शॉर्ट कोर्सेस, यू नो, जो आप ज्वाइन करते 20 days कोर्स, 15 days कोर्स, है ना, राइट? उसके हेल्प से अपना फाउंडेशनल लर्निंग को यू ट्राई टू इरिगेट, ट्राई टू फर्टिलाइज, है ना, ट्राई टू डेवलप फाउंडेशनल लर्निंग. यस और नो? बहुत बार मैं सुनता हूँ, कई वो रील्स वगैरह आते रहते हैं ना, लाइक बिल्कुल ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, यू नो, लाइक टीचर प्रेजेंट कंटेंट इन सच कोर्सेस, है ना, डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न इन देयर फाउंडेशनल कोर्स. वैसा नहीं होना चाहिए. गेटिंग योर पॉइंट? यू हैव डन डिटेलिंग ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, सोशल फैक्ट्स, सोशल फिनोमेनाज, है ना, ड्यूरिंग फाउंडेशनल कोर्स, राइट? You have detailed everything in your foundation notes. Now this is the time, with help of such course, so-called crash course, although I don't agree with this term, crash course, नहीं होना चाहिए ऐसा नाम. अब यहाँ भी नाम रख दिया Triumph IAS के मैनेजमेंट ने, लोगों ने. crash course तो ठीक है. Otherwise, with help of such quick revision sessions, you know, of syllabus, PYQ, NYQ analysis, है ना, like you should revise foundational notes. You have detailed everything in your foundational notes. Here you should do listing करना चाहिए, dimensional listing. Yes ना, अभी मैं example दूंगा, अभी discuss करूंगा एक topic. मतलब we will start, you know, today discussion of topics, और भी topics discuss करेंगे, उससे समझ में आएगा, right? तो ये काम होना चाहिए, है ना. और इधर अपन यही करने वाले हैं, like outlining the dimension, listing the dimension related to particular topic of syllabus, है ना, right? Vertically, horizontally, right? And then based on PYQ, like prediction of NYQ and how to handle NYQ, है ना, जो undesirable questions आपके अकॉर्डिंग होते हैं पेपर्स में, है ना, जिसको आप कहते हैं कि सर ये तो GS का क्वेश्चन हो गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया. ऐसा होता नहीं है. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस इन ईयर 2024. कोई भी क्वेश्चन नहीं है. बस यू हैव टू बी मोर, यू नो, रिफ्लेक्टिव एंड अप्लाइड. यू हैव टू बी मोर रिफ्लेक्टिव एंड अप्लाइड. आजकल हो क्या रहा है कि बिट्स एंड पीसेस में तो आप स्टडी करते हैं, फाउंडेशन करने के बाद उसको छोड़ के कहीं और आप स्लीप मोड में चले जाते. यस ना, मतलब क्योंकि इजी प्रेजेंटेशन मिल जाता, आपको PDF का एक पेज मिल जाता, टिक 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 टिक, आपको लगता कि नहीं यही सही है ना. कुछ गाइड्स उठा लेते आप. अरे वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, जहां भी आपने पढ़ा है, किसी भी कोचिंग में जो फाउंडेशन आपका है, ट्राई टू फर्टिलाइज दैट व्हाइल डूइंग रिवीजन, है ना. डू लिस्टिंग, detailing you have done, do listing of the dimensions. Yes na, right? Add some applied, you know, dimension, applied, you know, like facts, है ना, जो आज आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते, contemporary facts. Yes na, getting your point? So this is, now let us start the topic that we have to do, listing of dimensions. कि रिवीजन में आप क्या क्या डायमेंशन ध्यान रखेंगे. अच्छा, इसमें एक काम अपन और करेंगे. जैसे टुडे वी हैव स्टार्टेड, तो ठीक है, टुडे वी विल कवर, यू नो, फर्स्ट टॉपिक मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज. फॉर टुमारो यू ट्राई टू कंप्लीट रिवीजन ऑफ स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी एज ए साइंस, राइट. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सोशियोलॉजी एज साइंस, है ना. इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करके आएंगे and then I will outline the list. इसको मैं लिस्ट कर दूंगा यहाँ पे dimensions, right? And
We will analyze, PYQs based on that, NYQs, and NYQ ka, what should be your meaning and orientation, what should be the ideal type of, answers, isn't it? A structure of answer, right? How to extract, knowledge, that we will discuss in class, right? Okay, so let us start the topic, modernity and social changes in Europe and emergence of sociology, right? Fine. So, रिवीजन करना है आपको, है ना, ऑफ योर फाउंडेशनल नोट्स, जो आपने फाउंडेशन में नोट्स बनाया है, फाउंडेशन क्लास नोट्स, उसको रिवाइज करना है, जो डिटेल्ड है, जो आपने डिटेलिंग किया है, डिटेल्ड नोट्स. हियर व्हाट यू हैव टू डू लिस्टिंग करना है. In this preparation process, detailing and listing are two important, activities. Detailing, है ना, in the class, foundational class. Listing while doing revision in these short classes actually. Yes, na, so-called crash courses, right? So, listing is a spiritual act actually, है ना, and detailing is material act. तो मटेरियल ओरिएंटेशन आपका हो गया, जो फाउंडेशन में बहुत मटेरियली आप ओरिएंटेड रहते. अब कम से कम रुकिए, ठहरिए, है ना, अपने स्टडी टेबल पे बैठिए, यस ना, और लिस्टिंग करिए, राइट. डिटेलिंग हैज बीन डन, नाउ यू हैव टू डू लिस्टिंग करना है, ठीक है ना. तो इन दिस टॉपिक मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, व्हाइल डूइंग रिवीजन, फर्स्ट थिंग यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज modernity and social change. I mean concept of modernity and social change, isn't it? Then modernity and social change rooted in, after dark ages, rooted in Renaissance and Enlightenment. Yes, na? Then what is Renaissance? What is Enlightenment? Yes, na? Then third dimension, manifestation of enlightenment. Manifestation of enlightenment in form of commercial revolution, scientific revolution, French revolution, and industrial revolution. And one of the most important manifestation was that of change in intellectual orientation or intellectual climate. Intellectual orientation. Intellectual orientation, right? Then modern social changes. Modern social changes as a result of Renaissance, Enlightenment, revolutionary events, है ना? And social change, you will list in the sphere of what? Society, economy, polity, education, religion, right? Family system, a status system, a stratification, right? Etc. वो लिस्ट करेंगे, isn't it? Change in social facts, change in social phenomena, isn't it? Listing, right? Then nature of change. Nature of change. Nature of change was paradoxical. Yes, na? I mean, with modern social changes, there emerged many challenges, multiple challenges in European society, है ना? With change in social structure, social system, social disorder also emerged. Anomie, right, also spread in European society. Yes, na? So, you will also understand, describe nature of change that sought attention of intellectuals. Sought attention of intellectuals. Yes, na? Right. Then, you will also list, some facts related to counter-enlightenment movements. Yes, na? Counter-enlightenment movements. And lastly,
the intellectuals, the scholars of the day, right? Those who are referred as classical thinkers, classical sociologists, right? So, Auguste Comte, Herbert Spencer, Saint-Simon, Karl Marx, yes, na? Emile Durkheim, etc. Listing, right? So, this is how you will revise the topic. You will do listing after while revising your foundational notes. Yes, na? Right? Then, one thing you have to understand, कि in any topic of sociology, majorly, you have to keep in mind the social facts, concepts, and thinkers or theoretical strand. Thinkers or theoretical strand, है ना? तो उसका एक mind mapping कर लीजिएगा, है ना? The facts, social facts, phenomena, concepts, and theoretical strands or thinkers. Yes, na? Right. Then you will refer to PYQ. ये listing हो गया, revision हो गया, listing हो गया, refer to PYQ. And PYQ में analyze the question, right? You will find कि some questions are direct question, direct related to the topic. Yes, na? That requires not complex brainstorming. Yes, na? However, some other questions are reflective and applied in nature. There are many questions in previous year question bank related to this topic, reflective and applied in nature, that cannot be answered only with these dimensions, with the help of these dimensions, right? For example, sociology emerged in Europe and flourished to begin with on social reformist orientation in USA. Direction is given by UPSC कि now you extend this topic further, है ना? So what you will do in this listing, you will revise if you have learned. If not, then you will learn how sociology spread in America with reformist orientation. And there you have to learn about Jane Addams, Lou Du Bois, and many other, sociologists of America with reformist orientations in their writing. Those who established Hull House, है ना? Right? Etc. Right? So, this is, मतलब referring to PYQ, you have to understand further extension in a scope of syllabus. Yes, na? Look, like questions in optional subjects evolves every year, but syllabus, like syllabus prescribed by UPSC in year 2008, जो major changes हुए थे, minor changes 2013 में हुआ, right, question pattern में, otherwise major changes in year 2008. Yes, na? अब syllabus तो 2008 का है, and questions are evolving. So with the help of PYQ, you will extend the list. You will extend the dimensions that you have to cover in particular topic. Got this point? Yes, na? So this is, and you will expect such question. This question has been asked twice in previous year, so maybe repeated this year also, isn't it? And in this question, you have to simply, write about American sociologists, right, with reformist orientation in their sociological writings. है ना? Jane Addams was awarded Nobel Prize also, isn't it, because of her reform advocacies, yes ना, her activism, isn't it? तो उन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है ना, आंसर में उन्हीं के बारे में लिखना है, राइट? फिर PYQ देखिए, टॉपिक को के डायनामिज्म को समझने के लिए PYQ. सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज. तो यस, डिस्कस करना है, एंड व्हेन यू डिस्कस, जब भी डिस्कशन होता है तो यू आर expected to present a thorough analysis. Yes, na? Thorough analysis of the question, examining all sides of the argument. Yes, na? तो sociology, question कहता है कि sociology is preeminently a study of modern societies. So yes, it is preeminently a study of modern society, but not limited to a study of modern societies. It also studies, like continuity of tradition. Yes, na? Traditional social order, ethnic order,
एथनोमेथोलॉजिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट, है ना, इंडोलॉजिस्ट, यस ना, उनका रेफरेंस ऐसे क्वेश्चंस में देना होता है. अब इन दिस क्वेश्चन यू कैनॉट लिमिट योरसेल्फ टू दिस टॉपिक, रादर यू हैव टू बी रिफ्लेक्टिव, यस ना. तो क्वेश्चन आपको कहता है कि टॉपिक से बियॉन्ड जाकर समथिंग फ्रॉम पेपर टू, समथिंग फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स, मेजर थियोरेटिकल स्टैंड्स दैट यू स्टडी, फ्रॉम देयर आल्सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज, यस ना. सो ऐसे क्वेश्चन के बेसिस पे सम प्रेडिक्शन करेंगे आप कि इस बार भी अप्लाइड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें you have to go beyond the topic and you have to extract knowledge matrix from different topics of the syllabus, right? Then question is, explain sociology has emerged distinct discipline based on rationality and scientific temper. This is patterned question, yes ना. इस question में innovation नहीं है, application नहीं है, patterned question है. Europe was the first and the only place where modernity emerged. Comment. तो yes, अब ये this is not related to emergence of sociology, rather modernity. Europe was the only place where modernity emerged. Yes, na? Ab, on the basis of this question, you have to think something and add to this, add to your notes. Yes, na? इसमें noting करेंगे, right? कि some innovation may be there, right? Related to modernity. Question may be related directly to modernity. जैसा कि एक question like modernity is not a monolith but a plurality of experiences. Modernity is not a monolith concept, but rather plurality of experiences. It's not a monolith process. Yes, na? So such questions will predict on the basis of this previous year question. अभी मैं इसका आंसर आउटलाइनिंग कर दूंगा, right? कि कैसे इसमें क्या लिखना है. Similarly, what aspects of enlightenment do you think paved the way for emergence of sociology? Elaborate. Simply elaborate कर देना है आपको. Yes, ना? अब while doing elaboration, what aspect of enlightenment? तो aspects of enlightenment क्या आएगा? Commercial change in intellectual orientation, commercial revolution, scientific revolution, French revolution, industrial revolution, and related modern social changes and challenges that sought attention of scholars of the day. Yes, na, influenced by positivism, like researches in scientific world, chemical world, physical world, yes na, astronomical world, applied scientific method, and thus emerged science of society called sociology. अब ये क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन में बहुत इनोवेशन नहीं है, जितना आपने टॉपिक पढ़ा है उसी से आपका आंसर हो जाएगा, है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज हाउ यू विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू विल ऐड समथिंग, है ना. जैसे एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं. सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेशा, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. अब यहाँ क्रिटिसिज्म आ गया कि सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेशा. अब यहाँ यू हैव टू थिंक कि इज सोशियोलॉजी प्रोडक्ट ओनली ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेशा, या एनलाइटनमेंट like in occurred elsewhere also, isn't it? Right? Renaissance, Enlightenment, limited only to European society or elsewhere also. तो उसमें फिर you have to go beyond and you have to think about some scholars, some intellectuals like Ibn Khaldun, yes na, Tunis scholar, intellectual, isn't it? Those who have outlined Enlightenment, Renaissance, modernity in his writing, right? So certainly he belonged to Tunisia, like he wrote about Arab world, isn't it? So in his writing also we find traces of Enlightenment and Renaissance, yes ना? तो critical examination है, तो उसमें अपन criticism भी बात करेंगे, है ना? Renaissance, like Enlightenment in Indian civilizational thoughts that is reflected in Buddhism, Jainism, yes na, Sikhism, getting your point, reform movements in India, right? So critical analysis में you have to extract, some content not only from sociology but from history also, because these questions are related to social history or you can say historical sociology, yes or no, right? तो इसमें अपन को लिमिट नहीं करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सच क्वेश्चंस यू हैव टू ऐड सम पॉइंट, सब कंटेंट इन दिस टॉपिक, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? ठीक है, आई होप अंडरस्टूड समथिंग, या कुछ समझ में आया, राइट? ओके फाइन. तो दिस इज हाउ, अभी तक मैं बात कर रहा था कि कैसे यू हैव टू डू रिवीजन, I mean of foundational notes
and based on PYQs, please extend the scope of the topic. टॉपिक के स्कोप को थोड़ा एक्सटेंड करिएगा. यस ना? आई गेस कॉम्प्रिहेंडिंग. मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज आई हैव टू मेंटेन स्पीड टू कंप्लीट मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स इन 20 क्लासेस, है ना? थोड़ा ट्राई करिएगा. मोस्ट ऑफ यू हैव डन फाउंडेशनल कोर्स आपने कर लिया है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है ना? यू आर नॉट बिगिनर्स. यस ना? तो जो फाउंडेशन में कर लिया है उसका डिटेलिंग मुझे यहाँ नहीं करना है अभी. आई हैव टू जस्ट गिव यू सम इनसाइट्स ऑन रिवीजन एंड एनरिचमेंट ऑफ द टॉपिक. तो ये सब समझिए, इसको नोट भी करते जाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ. यस ना? ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ PYQs मैंने कहा कि आपको करना क्या चाहिए while doing revision, brainstorming over NYQ, PYQ to NYQ. और आजकल आप बिल्कुल अपने को लिमिट कर दिए PYQ पे, क्योंकि यूट्यूबर्स ने ऐसा बता दिया है लास्ट 2 years में PYQ. यहाँ तो प्रिपरेशन इज मोर टुडे ड्रिवन बाय यूट्यूबर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स. यस ना? रील मेकर्स जो दिन भर बैठ के रील बनाते रहते देन द पैटर्न ऑफ UPSC और द टीचर्स का तो बहुत कम रोल रह गया है ना? क्रिएटिव कोचेज, है ना, हैव ऑक्युपाइड दिस स्पेस, राइट? एनीवेज, ठीक है. तो NYQ अभी लास्ट ईयर नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ऑप्शनल्स, like almost 50% questions were new entries, है ना, in question paper, something different from what was asked earlier. क्योंकि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे बन गया रील की PYQ कर लीजिए हो जाएगा, PYQ कर लीजिए हो जाएगा. तो नहीं होता है ऐसा, केवल PYQ पे लिमिट करेंगे तो. यस ना? यू हैव टू थिंक NYQ, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है ना? टेस्ट में भी मैं वही ट्राई करता हूँ कि PYQ के बेसिस पे कुछ NYQ दिया जाए, है ना, जिसको आप लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं टाइम्स. अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहाँ PYQ के बेसिस पे. अरे 50% क्वेश्चन PYQ के बेसिस पे आएगा, 60 आएगा, कुछ तो नोवेल होगा ना. और नोवेल्टी नहीं होगा तो फिर कंपटीशन का मतलब ही क्या है? यस ना? अगर न्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे तो किस बात का कंपटीशन? यस ना? आपको compete करना है ना, तो अपने को रेडी करिए उसके लिए, कंपटीशन के लिए, राइट? ठीक है. सो लेट अस थिंक सम NYQs, है ना, on the basis of PYQ and how to structure. उसमें क्लासिकल स्ट्रक्चरिंग नहीं होगा. ठीक है ना? आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्ट्रक्चर ऑफ आंसर पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस ओरिएंटेशन में मैंने आपको बता दिया था हाउ टू स्ट्रक्चर आंसर, राइट? हाउ टू डू लिस्टिंग ऑल्सो, उस पर भी मैंने बताया था हाउ टू स्ट्रक्चर आंसर. ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में. बाकी रिटन उसका नोट ले लीजिएगा ऑफिस से, हाउ टू स्ट्रक्चर आंसर, राइट? मैं ब्रीफ कर दूं कि आंसर्स में का स्ट्रक्चर जो एक आइडियल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन करना है आपको, दैट इज इंट्रो, राइट? देन मेन बॉडी, in main body thesis, like your viewpoints that carries the legacy of thinkers, I mean thought, concepts, facts, social facts, static facts, dynamic facts, both thesis. Then alternative thesis, right? Then conclusion, synthesis. Conclusion में synthesis, right? Alternative thesis and alternative. Look, in sociology, in the discipline of sociology, right? Like positivist, alternative thesis provided by interpretivist. Yes na? First hand method. Yes na? Getting your point. Functionalist, alternative thesis, conflictist.
Yes na? Like classical functionalism, alternative thesis, structural functionalism like R.K. Merton. Yes ना? तो ये डिसिप्लिन के नेचर में है. Yes ना? थीसिस एंड अल्टरनेटिव थीसिस, राइट? ये डिसिप्लिन के नेचर में है, राइट? तो while structuring answer you should, है ना, write thesis, alternative thesis and then synthesis. Synthesis, you know, like synthesizing both and writing some applied social facts, phenomena, है ना? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लाइक थिंकर्स से, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, थिंकर्स, राइट, थिंकर्स यूनिट. What is historical materialism? Examine its relevance in understanding contemporary society. Yes ना? Examine its relevance in understanding contemporary. ये तो 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्रीवियस. हाँ, critically last 2024. Critically explain the salient features of alienation as propounded by Karl Marx. Yes ना? तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एलिनेशन, राइट, डिफाइन कर देंगे. देन क्रिटिकली एक्सप्लेन, क्वेश्चन कहता है क्रिटिकली एक्सप्लेन. देन एक्सप्लेनेशन, मेन बॉडी में कार्ल मार्क्स, टाइपिफिकेशन ऑफ एलिनेशन, explanation of causality of alienation, जो causes बताता है, causality of explanation, typification of explanation in the thesis part, isn't it? Then alternative thesis on alienation by Max Weber, yes na, and other sociologists, yes na, alternative thesis, right? And then synthesis, कि despite above criticism, alienation is relevant, yes na, to understand the social relation, है ना, status of workers, isn't it? The issues and problems faced by workers in gig economy, in platform capitalism, etc. Yes na, applied, right? So, reflecting on both thesis and antithesis, you have to give some applied examples, some references from contemporary, times, isn't it? In synthesis part, in conclusion part. मुझे लगता है कि this is the ideal पैटर्न ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन, है ना? जहां थीसिस होगा वहां अल्टरनेटिव थीसिस, मे बी एंटीथीसिस और सपोर्टिंग थीसिस, यस ना, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज, ठीक है. तो लेट अस सी सम नोवेल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, यस ना. जैसे इनलाइटनमेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनलाइटनमेंट रिलेटेड. तो जैसे आई हैव थॉट अ क्वेश्चन, emergence of sociology is deeply rooted in intellectual climate of enlightenment in modern Europe. Emergence of sociology is deeply rooted in intellectual climate of enlightenment of modern Europe. Critically discuss, right? Enlightenment related, think some novel question, established and patterned questions have been asked, exhausted also, isn't it? तो इस तरीके से कुछ नया क्वेश्चन थॉट कर लेंगे, राइट? क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इज रूटेड इन चेंजिंग इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, यस और नो?
So such novel questions you have to think, and you have to have readiness, yes na, for such novel entries, new questions, yes na, right, based on previous year questions. So in this question, ideal structure क्या होगा? First क्या करेंगे? Intro में, in introduction, what will you do? क्या think करेंगे introduction में? Enlightenment. अच्छा, defining enlightenment, yeah? See, wherever you find some new, term in question, right, like intellectual climate of enlightenment. In introduction, don't beat around the bush, rather directly, directly hit the nail, explain the topic, keywords, question keyword, right? Intellectual climate of enlightenment. What is intellectual climate of enlightenment? Right? The first sentence, please try to, don't go for, background talks, don't waste your time and space, your energy and motivation. Yes na? इवैल्यूएटर को पता है कि एनलाइटनमेंट क्या है, ठीक है, आपसे स्पेसिफिक बात पूछ रहा है, चेंजिंग इंटेलेक्चुअल, लाइक डीपली रूटेड इन इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट. तो स्टार्ट विथ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट. तो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ एनलाइटनमेंट refers to dominant ways of thinking, questioning and reasoning. Dominant ways of thinking, questioning and reasoning. Thinking. Scholars ने क्या किया? Think किया, right? The changes and challenges after these revolutionary events and in European society sought attention of intellectuals. Sought attention of intellectuals. So intellectuals, thought, think किया. So intellectual climate of enlightenment refers to the wage, dominant wage of thinking. Questioning. Intellectuals, questioned. Yes, na? Right. And reasoning. Reasoned in different ways. कुछ नया reasoning दिया. Yes, na? Reasoning that characterized European society during 17th and 18th century. Yes or no? Such climate was the result of Renaissance and Enlightenment that manifested in revolutionary events and modern social changes. Right? So, this is how ekdam pinpointed introduction you should write in such answers. है ना? Got this point? Then post introduction, main body में क्या लिखेंगे? Main body में, as I said, thesis, right? So in thesis part, you should describe key features of intellectual climate of enlightenment that prepared ground for emergence of sociology. Yes, na? That prepared ground for emergence of sociology. So key features of intellectual climate of enlightenment that you will list in thesis part. है ना? And key features क्या था? Key feature was rationality and empiricism, right, of enlightenment. है ना? इसको elaborate कर देंगे. Reason over tradition. Yes ना? जो traditional social facts था, phenomena था, established by church, religion, monarchies. Yes na? Those were questioned. New regions were put forward.
by the intellectuals, new reasonings were propounded by the intellectuals, है ना? जैसे like sea voyage was restricted by church, है ना? Church put ban on sea voyage, है ना, during dark ages, है ना? लेकिन अब वो ट्रेडिशन का एस्पेक्ट हो गया, उसके ऊपर रीजन, राइट, डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इजंट इट, है ना, टू चेक इन्फ्लेशन in Western European society. That inflation because of price rise and that because of monopoly over the silk route, monopoly over the traditional route that used to pass through Constantinople, Genova, yes na, etc. Monopolized by Arab traders and all, isn't it? तो एक नया रीजनिंग निकल के आया कि नो, न्यू रूट्स वुड बी डिस्कवर्ड, यस ना? तो ये सब कुछ फैक्चुअल एग्जाम्पल हो गया. रीजन ओवर ट्रेडिशन, राइट. इसमें इंटेलेक्चुअल्स पुट फॉरवर्ड, दे propounded न्यू रीजन्स, इंटेलेक्चुअल्स लाइक रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, यस ना, इन सब का रेफरेंस दे देंगे. तो एक पॉइंट की फीचर हो जाएगा क्या? की फीचर ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, रेशनैलिटी एंड एम्पिरिसिज्म, यस ना. फिर अपन थोड़ा सा इसको फर्दर एलोबरेट करेंगे. तो एक की फीचर आएगा, नेक्स्ट फीचर साइंटिफिक टेम्परामेंट. फिर उसमें आप राइज ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट मेथड, है ना, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब का रेफरेंस दे देंगे. हाउ डिड दे ड्रॉ इंस्पिरेशन, है ना, फ्रॉम देन फ्रॉम Renaissance, Enlightenment, yes na, Renaissance, Enlightenment, promoted scientific temper, isn't it? And that draw attention of scholars like Auguste Comte, yes na, they contributed to emergence of sociology, right? तो इस तरीके से फिर key features में we will list individualism, rise of individualism and human autonomy, thought in thinking, individualism and human autonomy, yes na, that was also key feature. क्योंकि ट्रेडिशनल यूरोप में क्या था? ट्रेडिशनल यूरोप में कलेक्टिव मोरालिटीज एंड दैट मोनोपोलाइज्ड बाय चर्च, है ना, कंट्रोल्ड इंडिविजुअल्स, राइट. ह्यूमंस वेर नॉट फ्री फ्रॉम दैट मोरालिटी, यस और नो, राइट. रॉयल अथॉरिटीज, नॉलेज propounded by church, है ना, that monopolized individuals, thinking, actions. But post-Renaissance, change age and individualism, human autonomy, yes na, these are reflected in writings of early scholars, yes na. Getting your point? Renaissance, Enlightenment thinkers like Kant and many others glorified human freedom, right? And from there, like मैक्स वेबर में हमने डिस्कस किया था कि कांट आर्ग्यूड कि ह्यूमंस आर पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल कॉजालिटी एंड पार्टली माइंड एंड कॉन्शियसनेस. इंडिविजुअल्स आर ओरिएंटेड टू क्लेम फ्रीडम एट द लेवल ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस. एंड फ्रॉम देयर मैक्स वेबर, है ना, ड्रॉ intellectual inspiration to propound theories of social action, individual action that involves individual meaning and orientation towards other individuals. So ये सब knowledge collect करेंगे, not limiting yourself to the topic modernity and social change in Europe, rather thinkers. Getting your point? Major theoretical strands जो आपने पढ़ा है वहाँ से भी आप knowledge matrix collect करेंगे, right? Further you can mention, like critique to church and monarchy, one feature of intellectual climate, faith in progress, human development, yes na, that faith is reflected in writings of early sociologists, classical sociologists, right? Emile Durkheim, Auguste Comte, है ना, right? Herbert Spencer, right? So that is also key feature, intellectual climate that contributed to rise of sociology. Then universalization of education, then
belief in universalism, generalization, isn't it, of the social laws, social principles, isn't it? Right, drawing inspiration from scientific findings, scientific researches, right? So these were all part of intellectual climate. इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जो प्रिंट कल्चर आया, printing of books, yes na, pamphlets, isn't it? That allowed accessibility to modern knowledge and education to mass of the people, isn't it? Right, so that was also key feature of intellectual climate, yes na. You can also mention, that one feature, revolutions, revolutionary events, isn't it, and changes, that was also an aspect, है ना, जैसे writings of Rousseau, Voltaire, Montesquieu, don't you think, like provided inspiration for French Revolution, isn't it? Getting a point? Ideology, किसी भी movement में, revolution में ideology is important, तो ideological, like insights, isn't it? And that revolution induced modern changes, and that changes and challenges studied by sociologists. So while justifying the statement that emergence of sociology is deeply rooted in intellectual climate of enlightenment of modern Europe, you will list all these in thesis part. Yes, na? Right. Then you will also think of some alternative thesis. Alternative thesis may, you should not deviate from the context of the question. Alternative thesis में क्या क्वेश्चन कहता है critically discuss. तो critically discuss में कि fine sociology emerged deeply rooted in intellectual climate of modern Europe, but at the same time what we see कि sociological theories, early sociological theories propounded by classical thinkers remained Eurocentric in nature. Yes ना? तो इस पॉइंट पे थोड़ा लिख देंगे, Eurocentrism in early sociology, criticism हो जाएगा. Yes or no? चाहे वो writings of Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, yes ना? और Max Weber और Karl Marx, yes ना? Karl Marx writing also reflects Eurocentrism, isn't it? Historical material evolution of society, historical materialism theory में जो आप पढ़ते हैं, yes ना, that also reflects that cannot be fully applied to understand Indian society. Indian society में हम उसको fully apply नहीं कर सकते, yes ना, क्योंकि यहाँ तो feudal like social structure, agrarian social structure coexist with industrial structures, yes or no? हमारे यहाँ तो ये सब exist कर रहा है ना, right? Primitive cultures also can be seen, Ongij, Jarvas, yes or no? Primitive communism type society. तो Eurocentrism उस लेवल पे we can criticize, है ना? और एक और criticism कि क्वेश्चन कहता है कि emergence of sociology is deeply rooted in intellectual climate of enlightenment in modern Europe. लेकिन what we see in American society, writings of Lee Du Bois, है ना, prepared a new intellectual climate, and that is reflected in reformist orientation in American sociology, early American sociology. Yes ना, Jane Addams का writings, right? Getting a point? तो हम ये नहीं कहेंगे कि emergence of sociology deeply rooted, है ना? एक तो criticism कर दिया Eurocentrism in the reflected in writings of classical thinkers, और दूसरा एक दो point of criticism कर देंगे on the basis of facts from American sociology. You can refer to Ibn Khaldun also. He is considered as precursor to thinkers like Auguste Comte, Herbert Spencer, Durkheim, Max Weber. Yes na? Right. He introduced, Ibn Khaldun introduced empirical observation and systematic analysis of the social facts even before emergence of sociology in Europe, right? Western sociology. तो ऐसा नहीं कह सकते एब्सोल्यूट टर्म्स में कि भाई इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ इनलाइटनमेंट इन मॉडर्न यूरोप ही कंट्रीब्यूटेड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो जाएगा. एंड फाइनली कंक्लूजन, सिंथेसाइज कर देंगे दोनों को कि फाइन
Emergence of sociology was made possible by intellectual climate of enlightenment. However, the discipline has evolved since enlightenment, right, with new insights, plurality of insights, isn't it, of American sociologists, Indian sociologists, yes, na, right, and particularly postmodern sociologists in today's time, in contemporary times. So on this line, we will synthesize, है ना? So this is one novel question, and for writing answer of such question, you will have to manage your knowledge matrix. आपको realize होगा कि ये points directly आपके foundational notes में नहीं लिखे हुए हैं, key features of intellectual climate नहीं लिखे हुए हैं in your foundational notes, but based on previous year question, isn't it, you have to predict some new question and you have to extract knowledge matrix, you have to have readiness, है ना? revision करने के बाद आपको ये readiness भी develop करना है कि ऐसा question अगर आ गया तो how I will manage to write such questions, right? So this is ठीक है. So let us take some more novel questions, कुछ और नया question अपन लेते हैं, है ना? जैसे एक क्वेश्चन, modernity is not a monolith. Modernity is not a monolith. Monolith, but plurality of experiences, right? Plurality of experiences discussed with reference to development of sociology. Catch है यहाँ, development of sociology. Discuss with reference of development of sociology. Development of sociology, right? Reference of development of sociology. Modernity is not monolith, plurality of experiences. Yes, na? Right. In the context of these three key dimensions of the question, you have to prepare your answer, you have to write your answer. Yes ना? तो first क्या इसमें करेंगे अपन? Introduction part में intro में simply define modernity. Modernity क्या है? Yes ना? With the keywords कि modernity induced by enlightenment, Renaissance, enlightenment, revolutionary events. Yes ना? And even today, right, the process of modernity continues. Yes, na? It is not a static concept, right? Rather, dynamic concept. And in the beginning, no doubt, it began with Western experience of Renaissance, Enlightenment, revolutionary events, right, and modern changes. However, over the period of time, multiple modernities shaped by local, social, cultural, historical traditions, colonial legacies, cultural continuities, etc. continues in society. Modernity continues in society. So these aspects you try to accommodate in introduction part, है ना? And this question will be asked, I guess, in 10 markers, है ना? 150 words में लिखना होगा आपको. तो ये इस तरीके से आप definition से, conceptual clarity से you start with some orientation on monolith modernity,
right? That is reflected in writings of classical sociologists, in the sociological assumptions of classical sociologists, classical thinkers, and multiple modernities, yes na, plurality of experiences in contemporary times or over the period of time. Development of sociology term है, तो development is a continuous process, right? तो introduction में ये point, then in main body, simply classical sociologists, main body जब आप शुरू करेंगे, main body of the answer, तो you should describe first कि how modernity is a monolith, modernity monolith कैसे है, right? तो here simply एक heading दे दीजिए, classical sociologist assumption of monolithic modernity, classical sociologist assumption of monolithic modernity, right? Then Auguste Comte's positivist modernity, जो बात करते हैं theological to metaphysical to positive stage. In positive stage, knowledge be acquired applying scientific method, जो पहले speculative knowledge था metaphysical stage में, theological knowledge theological stage में, वहाँ से positive. तो he emphasized on positivist modernity. Yes or no? मतलब उन्होंने other experiences को नहीं देखा, other aspects को नहीं देखा. Yes ना? Right. He simply emphasized on positivism. तो positivist modernity. Then Emile Durkheim's structural differentiation and solidarity. Yes ना? Organic solidarity particularly. मतलब अब देखेंगे कि he over glorified solidarity in his sociology. Emile Durkheim has glorified solidarity in sociology and considered it as an aspect of modern European society, industrialized European society with a specialized division of labor. Yes or no? अब ये सब कंटेंट कहाँ से आ रहा है? थिंकर से आ रहा है, थॉट से आ रहा है. यस ना? राइट. आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन रिलेटेड है मॉडर्निटी से, और मॉडर्निटी टॉपिक में आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन क्लास, आई मीन लर्नड इन क्लास, माय टीचर हैज नॉट टॉट इन क्लास. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का कंटेंट आपको एक टॉपिक से नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन अदर टॉपिक्स, है ना? तो हियर यू विल लिस्ट फर्स्ट ऑगस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविस्टिक मॉडर्निटी, देन Emile Durkheim, so structural differentiation and solidarity, particularly organic solidarity, an aspect of modernity, European modernity, है ना? Then you can refer to Karl Marx, capitalism, Karl Marx का like capitalist modernity and revolution, yes ना? Karl Marx को क्या दिखा? Opportunity दिखा कि capitalism में क्या होगा? Revolution होगा. Modern capitalism will lead to revolution and freedom from all exploitation, isn't it? Right. So he also limited himself to capitalist modernity, exploitation, isn't it? Class conflict and revolution. Yes na? Right. Then Max Weber का monolith modernity, monolithic modernity, है ना? Modern rationality and bureaucratization, मॉडर्न रैशनैलिटी एंड ब्यूरोक्राटाइजेशन. आप देखेंगे कि उन्होंने ओवर ग्लोरीफाई किया मॉडर्न रैशनैलिटी एंड ब्यूरोक्राटाइजेशन को, इजंट इट? ब्यूरोक्राटाइजेशन एज a system of organization, as a means for organization of social actions. Yes ना? So this is. तो इन सब के और भी कुछ थॉट्स आपको याद आएगा थिंकर्स, तो उसको मेंशन कर देंगे. शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 4-5 इधर मेंशन कर देंगे, है ना? कि पॉजिटिविस्टिक मॉडर्निटी, स्ट्रक्चरल, है ना, and organic modernity in form of social structural differentiation and solidarity. Yes na? Modern capitalistic modernity, Karl Marx. Modern rationalization, Max Weber. Yes na? Right, Max Weber ka. Then second part of the question, plurality of experiences. It's not a monolith but plurality of experiences discussed with reference of development of sociology. अब यहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एक कनेक्टिंग लिखेंगे ओवर द इयर्स इज नॉट लिमिटेड टू द कॉन्सेप्शन ऑफ मोनोलिथिक मॉडर्निटी रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, राइट? एंड देन देयर ऑनवर्ड यू विल एम्फेसाइज ऑन प्लूरल मॉडर्निटीज, प्लूरैलिटी ऑफ मॉडर्निटी, है ना? मल्टीपल मॉडर्निटी
and particularly post-colonial experiences of modernity, है ना? Post-colonial experiences of modernity, right? Colonialism के बाद जो modernity का experience है, उसमें बहुत सारे point आ जाएगा, है ना? Like जैसे Indian society में modernization of tradition, we can write in paper 1 also, modernization of tradition, voicing, क्योंकि this question is not related to particular topic, this is applied question, yes ना? This is reflexive question, this is applied question. इसमें हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में मॉडर्निटी का एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, यस ना? आप हाइब्रिड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट इसमें लिखेंगे, लाइक जैसे दैट इज सीन इन राइटिंग्स ऑफ एम.एन. श्रीनिवास, जो एशियन एक्सपीरियंसेस है, स्पेसिफिक इंडियन नहीं लिखेंगे, पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस ऑफ मॉडर्निटी, है ना? हाइब्रिड मॉडर्निटी, राइट? लाइक संस्कृताइजेशन एलॉन्ग विथ वेस्टर्नाइजेशन. हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है एज वेल एज संस्कृताइजेशन हो रहा है, यस ना? इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इट्स नॉट, आई मीन दीज कंट्रीज डिड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट मॉडर्निटी ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, है ना? जैसे अगर आप कहेंगे तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, यस ना? दीज लैंग्वेजेज वेर ग्लोरिफाइड, है ना? In these languages, academic writings were, done in European society, but many Southeast Asian countries, their native language, modernized with their native culture. Language is one important aspect of culture. Getting a point? So that also you will write, है ना? Modernity का experience in China, right? फिर you will also describe the concept of multiple modernities. आइस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, EISENSTADT, आइस्टेंट का कॉन्सेप्ट, मल्टीपल मॉडर्निटीज इन टुडेज सोसाइटी, डिस्टिंक्ट मॉडर्निटीज, इजंट इट? डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ यूरोपियन एक्सपीरियंसेस, राइट? तो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो यू विल राइट कि प्लुरैलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, और एग्जाम्पल देते जाना है आपको, फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, दिस आंसर शुड बी रिटन विथ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना? कि हाउ with continuity of tradition, right? Indian society, African society, Southeast Asian societies have experienced modernity with continuity of tradition. Yes, na? Right. I hope understood. So this is how you have to manage this question. Ki modernity is not a monolith, but plurality of experiences. Discuss with reference of development. In second part, plurality of experiences, you can also reflect on Indological tradition, not only M.N. Srinivas ka write up, Indological tradition, है ना? You can reflect on Indian Marxism, yes na? Marxism of A.R. Desai, that is distinct from European capitalist modernity, concept of European capitalist modernity, yes na? Like A.R. Desai did materialistic analysis of, historical analysis of Indian society in terms of what? Pre-colonial, colonial and post-colonial. He did not blindly imitate, Marxian concept, yes na, of historical materialism, isn't it? Right. And he described experience of modernity in Indian society that is distinct from that of European society. Yes na? उनके राइट अप में आप अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में सुनते हैं, yes ना? इंडस्ट्रियल क्लास के बारे में आप पढ़ते हैं, yes ना? एजुकेशनल डिस्पैरिटीज, isn't it? How it further, like increased after independence, isn't it? With selective modernization of education system, right? So you have to reflect on these thinkers to aggregate content in this answer, right? And then conclusion. Conclusion में what you will do? Development of sociology. Development of sociology. तो conclusion में लिखना है कि although sociology emerged with the conception of monolith modernity reflected in writings of classical sociologists, but over the years, plurality of experiences in modernity has enriched the discipline of sociology. Plurality of experiences in modernity has enriched the discipline of sociology. Yes na? Plurality of experiences. आप देखिए तो be that modernity in family, marriage system, be that modernity in economic system, ये modernity है ना? Swiggy, Zomato, isn't it? That has Ola, Uber, that has given rise to gig economy system.
यस और नो, ये प्लुरलिटी ऑफ एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? यूरोपियन सोसाइटी में जो मॉडर्निटी हुआ, कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी, उसमें दो क्लासेस इमर्ज हो रहे हैं, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर. बट मॉडर्निटी इन इंडियन सोसाइटी, मॉडर्निटी इन अदर एशियन अफ्रीकन सोसाइटीज, है ना, एक्सपीरियंस इज डिफरेंट. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? हमारे यहाँ फॉर्मलाइजेशन, यूरोपियन सोसाइटी में फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज्ड विथ मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, कैपिटलिस्टिक मॉडर्निटी, लेकिन इंडियन सोसाइटी में informalization has increased post LPG. We see in growth and rise of informal sector. Yes na? So this is how कि with reference of development of sociology. तो development of sociology में ये सब आ गया है ना. आज आप gig economy पे क्वेश्चन लिखते कि नहीं? आज gig economy and all these are studied in sociology. Yes na? Right. So this is, I hope understood. Yeah. Look, here the point is कि please don't compartmentalize yourself in a particular topic, है ना, to write such novel questions. नहीं तो confusion होगा, लिख नहीं पाएंगे, justify नहीं कर पाएंगे. ऐसे क्वेश्चन में you have to maintain intellectual elasticity, है ना, intellectual elasticity maintain करिए, है ना, केवल उस टॉपिक को थॉट नहीं करिए आंसर लिखते समय, rather reflect on the syllabus, है ना, reflect on observational facts that you see in today's society. Yes, na, and try to extract some content to substantiate your thesis and alternative thesis, and then conclusion synthesis. Right? So this is. Now, next question. Let us take one more question related to this topic. Critically analyze the view that sociology. समझिएगा प्लीज. Critically analyze the view that sociology as a discipline carries the legacy of colonial modernity. Critically analyze sociology as a discipline carries the legacy of colonial modernity. So think, then I will critically analyze. थोड़ा thought करिए, what to write in intro, what to write in main body, what to write in conclusion, in main body, what to write thesis and alternative thesis.